Hello students, welcome you all on the solution and discussion of NTSE SET 2020 stage 1 question paper. So let's begin with the physics. So the very first question in the physics is the group of vector quantities are. So our task is to find the group of vector quantities. यहाँ पे अगर displacement की बात करें तो basically displacement is what? It's a vector quantity. This one is also a vector quantity. Time की बात करें तो time is a scalar quantity. ठीक है? Area की बात करें it's a scalar quantity. Density is a scalar quantity. Mass is also a scalar quantity. Speed, scalar quantity. Length, scalar quantity. Impulse, a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. And force is a vector quantity. So, तीनों quantities vector कौन से case में? Only in the fourth one. Now, let's discuss another question. The velocity time graph of an object moving with a uniform velocity is. So our task is to find the velocity time graph of an object moving with a uniform velocity. Uniform velocity मतलब constant velocity. और हमें पता है कि constant velocity के केस में velocity time graph के अंदर for a uniform velocity और constant velocity the graph is parallel to time axis. तो यहाँ पे हम देखेंगे parallel to time axis कौन सा ग्राफ है. See, this one is not parallel to time axis. This one is not parallel to time axis. Same for this. This one is parallel to time axis. So this one is correct. और अगर आप यहाँ पे देखें तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो ये है. इस टाइम पे भी वेलोसिटी क्या है? यही है. इस टाइम पे वेलोसिटी देखी जाए तो वो भी यही है. तो इस पूरे ग्राफ के अंदर जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट. If force, momentum and displacement are represented by A, B and C respectively, then the term A, C and by B will represent. तो टर्म AC by B किसको रिप्रेजेंट करेगा ये हमें ढूंढना है. तो लेट्स फाइंड इट आउट. वेरी फर्स्ट द टर्म A इज व्हाट? जो फोर्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A को. तो ये फोर्स इज A इज फोर्स, B इज व्हाट? B इज मोमेंटम and C is displacement. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकंड. मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. तो मास की यूनिट होगी केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड. वहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर. न्यूटन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी और एक्सेलरेशन की हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. तो हम क्या करने वाले हैं? इन टर्म्स को या हम कहें इन यूनिट्स को यूज करने वाले हैं. We are going to use these units on behalf of ABC. ठीक है? In this equation. So as per equation that is AC by B. Let's substitute these units in this equation. A की जगह पे रखते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर into C that is meter divided by B kg मीटर पर सेकेंड. ओके. तो यहाँ पे देखिए मीटर से मीटर कट गया, केजी, सेकेंड से सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड. तो बच गया क्या? मीटर पर सेकेंड. एंड मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? इट्स अ यूनिट ऑफ व्हाट? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ सरफेस इज 60 kg, देन हिज मास ऑन द मून विल बी. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मास है एक पर्सन का वो कितना है? 60 kg ऑन द अर्थ सरफेस. Then his mass on the moon, उसका मास मून पे कितना होगा? So basically जो मास होता है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्वांटिटी है. वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता और किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता. इट्स अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो बेसिकली अगर बात करें किसी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में तो यूनिवर्स में वो कांस्टेंट रहेगा. सपोज इफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ 60 kg इज प्लेस्ड ऑन मून और एनीवेयर इन द स्पेस, इट्स मास विल रिमेन कांस्टेंट. So that's why the answer will be 60 kg. The next question is, on half the distance between two masses, the gravitational force between them will be. So here, suppose there are two objects. Here are the two objects. One having mass m1 and one having mass m2. And the distance between their center is suppose
D. Okay, then definitely there will be a force acting on in between them, that is gravitational pull force. Suppose that is F. Okay, so now we can write the equation, that is F is equals to G into m1 m2 upon d square. नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर हम उनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दें, हाफ कर दें, किनके, इन दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दें. नाउ द डिस्टेंस इज d/2. तो सेम सिचुएशन, m1 again m2. now the distance is d/2. okay, now the force don't know will be same or not, that's why we will use another term, that is F1. okay, in that case F1 is equals to क्या आ जाएगा, F1 is equals to G into m1 m2 divided by d/2 square. So what we will find, F1 is equals to 4 times of G m1 m2 divided by d square. okay, so basically G m1 m2 upon d square, that is equivalent to F. तो ये क्या आ जाएगा, this will be 4F. तो 4 times, so gravitation force will increase by 4 times. 3 will be correct answer. Now the next question, if the speed of a wave is 250 meter per second, अगर एक वेव है उसकी स्पीड 250 मीटर पर सेकंड है और उसकी जो वेवलेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, then the frequency will be, okay, so the relation between the wave speed, frequency and wavelength is given by a simple equation, that is V is equals to lambda into frequency. okay, so let's substitute these values, but as we know the wavelength is in centimeters, so our task is to convert that centimeter into meters. तो हमें ये जो 50 सेंटीमीटर है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में. तो V that is 250 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा, लैम्डा कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 अपॉन 100 मीटर. नाउ दिस वन इज मीटर, ओके, तो 50 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर्स में, डिवाइड बाय 100. In that case answer will be 250 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, अगर इससे नीचे लाते हैं तो ये किस में, ये डिवीजन में आ जाएगा और ये कहां आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. ओके, दिस विल बी हियर इज इक्वल्स टू, इन दैट केस आंसर इज 500 1 upon second is equals to frequency, या फिर कह सकते हैं 500 hertz is our frequency. okay, now the next question is, an object of mass 10 gram is moving with an acceleration of 10 meter per second square. The mass of object is 10 gram moving with an acceleration of 10 meter per second square. So definitely there is a force acting on it which accelerates it with the acceleration 10 meter per second square. एक फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमारा टास्क है उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसे निकालना. सो लेट्स फाइंड इट आउट. सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड विद m इज 10 ग्राम. कितना है, 10 ग्राम. और हमें पता है हमें इक्वेशंस के अंदर हमेशा किस में रखना होता है, एसआई यूनिट में, दैट इज किलोग्राम. तो कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम divided by 1000. So that will be, if we solve it out, that will be 0.01 kilogram. Next, acceleration. Let us say 10 meter per second square. As we know, force by Newton's second law, force is equals to mass into acceleration. जो है वो क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया. तो मास कितना गिवन है, 0.01 kg. एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आंसर विल बी 0.01
1 न्यूटन। तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना आ गया 0.1 न्यूटन। So which one is correct? Option 2 is correct. Now the next question. Lenz's formula is, our task is to find the Lenz's formula, and as we know, what is the Lenz's formula? That is 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. This one is our Lenz's formula, where v is what? Image distance, and u is object distance. If we talk about f, f is what? Focal length. So which one is correct? Let's find it out. इसमें प्लस साइन है, इसमें भी प्लस साइन है, और इसमें माइनस है, बट यहाँ पे 2 है. This one is correct. Now the next question is, focal length of a lens is 50 centimeter. In diopter, power of lens will be. Our task is to find the power of a lens. If focal length of a lens is 50 centimeter. So as we know, power is equals to what? 1 upon focal length. But only if focal length is in meters. Okay? और power किस में आएगी? Diopters में. But if focal length is in centimeters, in that case the formula will be 100 upon focal length. The focal length will be in centimeters in that case. So we will use the second one. The power is equals to what? 100 upon, or you can convert 50 centimeter into meters and then you can substitute the same over here in this equation. Okay? So P is equal to 100 upon 50. The power is 2 diopters. So which one is correct? Is correct. Now the next question. The correct relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror is. Our task is to find the correct relation between radius of curvature and focal length. And we know the correct relation between the radius of curvature and the focal length is twice of f, or 2 times of focal length is equals to radius of curvature, or we can say focal length is the half of radius of curvature. Okay, we can write it like this also, that is r by 2. So which one is correct? F is equals to, basically r is equals to f by 2. ये नहीं है, r is equal to f नहीं, r is equals to 2f. This one is correct. तो यहाँ से ये भी सही है, ये भी सही, both are correct. ये देख लेना आप कौन सा given है options में. So this one is given, that's why this one is correct. So option 3 is right. Now the next question. Refraction from denser to rarer medium for a light ray. The value of angle of refraction at the condition of critical angle is. So basically where the critical angle arises. When we have a denser medium and rarer medium, and the light travels from denser to rarer medium. In that case, there is a total internal reflection if the angle is greater than critical angle. In that case, what we will do? So basically critical angle क्या होता है? It's an angle between, it's a maximum angle of incidence over which हमें क्या देखने को मिलता है? Refracted light ray becomes parallel to interface. वो किसके parallel हो जाएगी? Interface के. This one is interface. ठीक है? ये XY जो है वो interface है. तो XY के parallel हो गई मेरी क्या? Refracted ray. तो in that case normal से कितना angle बना रही है? 90 degree. So what's the question? Asking for the value of angle of refraction. And angle of refraction is angle between normal and refracted ray. That is 90 degree. So which one is correct? Now the next question is, the resistance of a bulb marked 220 volt and 10 watt is. So our task is to find the resistance of a bulb whose power rating is already given here. So for this, we will use the relation of power with electric potential and a resistance. That is, power is equals to V square upon R. So let's substitute the value of electric potential, that is 220 volt, and power over here. So we can write it like this, R is equals to V square upon P. इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर दिया इसको. और if we will substitute the values, 220 volt का square divided by 10 watt, what you will find?
that is equivalent to 4840. Okay, if you divide it, you will find this value. So which one is correct? 2. Now the next question is, a person of mass 100 kg reaches a height of 5 meters in 10 seconds. So the mass of the person is 100 kgs and it reaches a height of 5 meters in 10 seconds. Our task is to find the power used by the person. हमें निकालना है कि कितनी power person use करता है. So in that case we will use power. The formula of power is equals to what? Work done upon time taken. So in this case, power is equals to work done, that is mg into h divided by t, where mg is the weight of the person and h the height or the displacement. So if we substitute the values over here, अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस केस में मास कितना आ जाएगा? मास है 100 kg, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हाइट 5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा उसे? 10 seconds. If you simplify it, in that case the answer will be 500 watt. So the correct option is 1. Thank you.